Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to Macon visiting the campuses all over India. आप जानते हैं ये एक बहुत ही reputed मिनी रत्ना कैटेगरी 2 कंपनी है, very good company for civil engineers, and many PSUs visit the campuses for recruitment of the students. उनमें बहुत सी आपकी ऑयल सेक्टर कंपनीज भी होती हैं, आपके जैसे HPCL है, BPCL है, ये कंपनीज जाती हैं रिक्रूटमेंट के लिए. उसी तरीके से मैकॉन इस बार बहुत ज़्यादा कैंपसेस में इट इज़ विजिटिंग. नो कैंपस का रिक्रूटमेंट इंटरव्यू इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर. In campus recruitment interview, they ask you many things. They compare you with your peers, they compare you with other students. They ask you what is your rank in the class, why your rank is like this, what was their extracurricular activities, what did you do in the college, why you want this company only, were you attending other campus recruitment drives also, और कौन सी आपकी जॉब लगी और कौन सी कंपनीज में आप बैठोगे. तो क्वेश्चंस अलग टाइप के होते हैं जब कैंपस रिक्रूटमेंट होता है बाय पब्लिक सेक्टर. There are certain common things also, like every public sector expects that you should know about that company. No doubt they give you some pre-placement talk also, in which they tell something about themselves, about the company, but you should have knowledge about Macon, you should have knowledge about the company for which you are going for recruitment, why you want to join us, why we should take you, where do you stand in the class, what other opportunities you have, what you have done in the college. तो वो आपका only academic background ही नहीं देखते हैं. Like it is not like your written में आपके मार्क्स कितने हैं और वो कितना है. They see many things. They also see your extracurricular efforts which you have done in the college. That also is seen. कि आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं. तो सब चीज़ों का मिक्सचर होता है कि आपकी रिक्रूटमेंट होती है. एंड सम टाइम सडनली दे विल आस्क यू टू गो फॉर GD एंड इंटरव्यूज एंड ऑल. सो अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, then Europedia is the platform for you. You can really prepare very nicely for the mentors, for HR, for technical, for GD, GTs, all these things together you can prepare with the mentors of Europedia. And especially for Macon, start preparation fast. In this you will prepare for all the domains, introduction, HR. Yes, one more thing is very important, like when the company goes for campus recruitment, then project, BTech project, MTech project, if you are doing MTech and all, and internship is very important. Where you have done internship, what projects you have done, what major project, minor projects you have done, those kind of things become more important. और आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी. तो अगर आपके कॉलेज में ये कंपनीज आती हैं या आने वाली हैं और आपको तैयारी करनी है, स्टार्ट प्रिपरेशन विद द मेंटर्स ऑफ यूरोपीडिया. पब्लिक प्राइवेट जो भी कंपनी है, यू कैन प्रिपेयर रियली वेल. सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर योर रिक्रूटमेंट, and keep these things in mind which I told you, and start your preparation. Thank you.